And how are you doing today? Thanks for connecting, and this video is about one of the latest cue cards. As you know that before sharing the sample answer with you on YouTube, I always update my IElts speaking booster. और अगर आपको ये क्यू कार्ड्स रिटन फॉर्मेट में चाहिए, you can certainly buy my IElts speaking booster, an electronic book which you can access in less than 30 seconds. Before I start today's video, I request you to please subscribe the channel, hit the subscribe button and the bell button to get the notifications of my newly uploaded videos. So let's check out what the cue card is. Cue card is talk about something you learned from an old person. What did you learn? Why you learned it, from whom you learned, and how was the experience? आजकल मैं कहूँगा बल्कि यंगस्टर्स बुड्ढों को ज़्यादा सिखा रहे हैं। पता नहीं बुजुर्गों के पास कुछ रहा है हमें सिखाने के लिए या नहीं। अभी तो मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, थोड़े से बाल सफ़ेद होने जा रहे हैं। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ अपने दादाजी की, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन मैं एक चीज़ की बात करूँगा जो उन्होंने सिखाई, और वो है गार्डनिंग। काफ़ी डिफरेंट आइडिया लगेगा आपको, लेकिन बहुत ईजी। एज यू नो दैट माई हैबिट एंड माई इंटेंशन इज टू मेक IELTS ईजी फॉर यू, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग। रियल टाइम में बोलना है, सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं है। बोलना है तो फ्लुएंटली बोलना है, तो इसके लिए आइडिया तो सिंपल होना ही चाहिए। बात करेंगे दादाजी मेरे, जो एक फार्मर रहे हैं, शुरू से उन्होंने बहुत फार्मिंग अपनी लाइफ स्पेंड की है। लेकिन जब से हम सिटी में मूव किए हैं तो वो फार्मिंग तो नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को गार्डनिंग में एंगेज करके रखते हैं। मतलब 1-2 घंटे रोज वो घर में जो लॉन है, ग्रास लगा रखी है, प्लांट्स लगा रखे हैं, उनकी वो देखभाल करते हैं। उनको देख के आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और रादर उन्होंने रिकमेंड भी किया कि जैसे हमें स्ट्रेस हो जाती है या नेचर के पास रहने में, ये एक्टिविटी आपको बहुत हेल्प करती है, क्लोज टू द नेचर। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो उनकी रिकमेंडेशन पर आपने ये एक्टिविटी उनके साथ करनी स्टार्ट की। उनके पास बहुत नॉलेज है, यू कैन से, क्योंकि जब वो आपको बताते हैं डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट जो घरों में लोग लगाते हैं, एंड द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द सॉइल, के सॉइल में कौन कौन से तत्व रहते हैं, और हम कैसे घर पर ही घर के वेस्ट से, फूड वगैरह से मैन्योर तैयार कर सकते हैं, खाद तैयार कर सकते हैं, जिससे अच्छे प्लांट्स ग्रो करते हैं। अभी इन द इवनिंग यू गाइज ऑलवेज स्पेंड सम टाइम टुगेदर, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आप गार्डनिंग करते हैं। एक चीज आपको और जो बहुत मजा दिलवाती है इस एक्टिविटी में, वो है वेस्ट मटेरियल से जो आप पॉट्स बनाते हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग प्लास्टिक के जार, जो भी घर में चीज मिलती है जो फालतू है, उसमें कोई ना कोई प्लांट लगा देते हैं, जिसकी वजह से आज आपके घर में कई सौ पॉट्स हैं जो आपने रखे हुए हैं अपने गार्डन एरिया में या गार्डनिंग एरिया में, और आपके घर की ये खूबसूरती को और भी एनहेंस करते हैं। देन ऑफ कोर्स जब आप कोई एक्टिविटी किसी के साथ करेंगे तो इट गिव्स यू एम्पल टाइम टू स्पेंड टाइम टुगेदर। आप उनके टॉक्स को बहुत एंजॉय करते हैं, और उनसे आपको कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, रिलीजन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड आई बिलीव दिस इज एनफ। इससे बड़े आराम से आपका 1 या 2 मिनट का क्यू कार्ड तैयार हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स चेक आउट द सैंपल आंसर एज इन द स्पीकिंग बूस्टर। एंड अनडाउटेडली यू नो नाउ कि आप कैसे IELTS स्पीकिंग बूस्टर परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर पे, आप स्पीकिंग बूस्टर लिंक भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका परचेज लिंक मिल जाएगा। थैंक्स, एंड लेट्स कंटिन्यू टू चेक आउट द सैंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड. Well, old people are like storehouse of knowledge, and there is so much for us to learn from them. Here, I would like to talk about the skill of gardening that I've learned from my grandfather. Actually, my grandfather, who is about 70 years of age now, has spent most of his life doing farming. Since we have moved to city now, he cannot visit his farms, but he spends most of his time enjoying gardening. Seeing him doing this activity, I developed interest and requested him to teach me how to take care of plants. Now, every evening, I spend an hour daily to help my grandpa in this pursuit. I must say, he has profound knowledge of gardening, and he introduced me to various species of plants and vegetables that are frequently
grown at homes. He also told me about the nutrients found in soil and how to naturally improve the fertility from the domestic waste. We also grow seasonal vegetables at home and enjoy fresh homegrown vegetables, which most people do not. One thing that developed my further interest in this activity is making flower pots from plastic bottles and other things, as he never let anything go waste. He plants seasonal flowers and herbs in empty plastic bottles and containers, and today we have more than 200 such pots that enhance the beauty of our garden. I not only learn about gardening, but spending time with him also helps me to learn the history and culture in a better way. I'm grateful to my grandpa for helping me to learn practical skill which keeps me physically and mentally fit. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you're an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!